So just give me 2 minutes as I share the screen. Anilji, can you see the screen? Yes. Okay. So reversing Parkinson's disease with Kumbhak therapy, freedom from medicine. Namaskar. I welcome you all to the Kumbhak Therapy for Parkinson's webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing the Parkinson's disease that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money and time on various treatments. Kumbhak therapy can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Who is this webinar for? Very, very important. For people who are tired of temporary treatments and are looking for something natural and permanent. कुछ लोग जो थक चुके हैं टेम्पररी ट्रीटमेंट से और कुछ नेचुरल और परमानेंट ढूंढ रहे हैं. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health issues. What are your doctors telling you? Very, very important. You will have to take medicines lifelong. आपके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, आपको सिर्फ मैनेज करना है. Organs do not regenerate. Organs regenerate nahi hote hain. Today is the day that you will come to know you may not have to take medicines lifelong to manage your disease. Does that bring a smile to your face? Your problem can definitely be cured. आपके problem का solution है. Organs can definitely regenerate. What are the webinar contents? Introduction to Parkinson's disease, understanding Kumbhak therapy, role of Kumbhak therapy in reversing Parkinson's disease, and program details. Introduction to Parkinson's disease. Let us understand what exactly is Parkinson's. अभी किसी ने बोला left hand weakness. That need not be Parkinson's, okay? So Parkinson's disease is a condition that slowly affects how a person moves. Over time, it can also affect their memory, thinking, and emotions. What are the key symptoms? People with Parkinson's may experience shaking of hands or legs, stiffness in the body, slow movements, difficulty maintaining balance. Symptoms usually increase over time if not managed properly. Causes of Parkinson's disease. Genetic factors. Sometimes Parkinson's can run in the family because of changes in certain genes. However, this type of Parkinson's is not very common. Environmental triggers, being around harmful chemicals like pesticides or certain metals for a long time can increase the chances of getting Parkinson's, especially in people whose bodies are already more sensitive to such things because of their genes. Aging and cell degeneration. As we grow older, some of the brain cells that help control movement start to wear out and stop working properly. These cells make a chemical called dopamine, and when the body produces less of it, movement becomes slow, shaky, and difficult. Current treatment limitations. Current medicines, symptom focus. Current medicines mainly help control the symptoms like shaking or stiffness for some time. They do not fix what is actually causing Parkinson's to worsen inside the body. What are the side effects? When you take Parkinson's medicines for many years, they can sometimes start causing unwanted shaking or extra movements. Also, over time, the same medicine may stop working as well as before. Non-motor symptoms. Most treatments do not properly help with problems like poor sleep, sadness, stress, or memory issues. So, overall, day-to-day life still remains difficult to manage. Understanding Kumbhak therapy. What is the scientific basis of Kumbhak? Please listen properly. These are very, very important things that you must understand. Oxygen carbon dioxide balance. Holding the breath. What happens when you hold the breath? For a short time, helps the body use oxygen better and keep the right balance of gases inside. This balance gives your cells more energy to work and heal properly.
Nervous system regulation. Kumbhak therapy helps your body relax deeply by calming the nerves. When the body is relaxed, it can repair damaged nerves better and support smoother movements. Neuroplasticity stimulation. Kumbhak therapy helps more blood and oxygen reach the brain. This supports the brain's healing ability and can help damaged nerves work better again in conditions like Parkinson's. What are the benefits of Kumbhak therapy? Physical health, practicing regularly helps your heart work better, improves your breathing, and makes your body stronger and active in daily life. Mental clarity. Kumbhak helps calm the mind, reduces worry, helps you think more clearly, and can lift your mood. With regular practice, you feel more relaxed, balanced, and positive in daily life. Neurological support. Kumbhak therapy helps your body move better, reduces shaking, and protects your brain so the disease does not get worse quickly. Holistic vitality. This therapy helps the mind and body work together smoothly, which brings back your energy, improves how you feel, and makes you overall healthy. Role of Kumbhak therapy in reversing Parkinson's disease. Improves motor symptoms. Coordination improvement. I'm sure most of you all will be able to relate to this. Controlled breath retention exercises stabilize the nervous system, enhancing motor coordination and precision. Tremor reduction. Regular practice helps regulate brainwave activity, which can reduce the severity and frequency of tremors. Postural stability. Strengthening respiratory and core muscles through breath control supports better body balance and posture. Neuroprotective effects. Kumbhak therapy promotes oxygenation and circulation in the brain, safeguarding neurons from degeneration. Dopamine regulation. Deep breathing techniques may boost dopamine synthesis, counteracting its deficiency seen in Parkinson's patients. Cognitive support. This therapy helps activate the parts of your brain that control memory and focus so you can think more clearly and remember things better. Stress reduction and mental health. Anxiety relief. Holding the breath for a short time helps the body relax deeply, reduces stress and anxiety, and makes you feel calmer from the inside. Emotional resilience. Calm, guided breathing helps you handle stress better and keeps your mind and emotions more steady and relaxed. Kumbhak therapy helps your mind and body relax deeply. That helps in your sleep quality. It makes you feel calmer, able to sleep better, and good sleep helps improve your mood and overall mental health. Now, I'd like to introduce you all to Swami Sri Rajvibhu ji, a rare Kumbhak yogi. Swamiji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine. Let's hear from Swami Sri Rajvibhu ji. Please pay attention to what he has to say about the human body and the diseases because you will not find this information anywhere else. Through his knowledge, thousands of people suffering from chronic ailments have transformed their lives completely. It can change yours also. Thank you so much for listening to me patiently. Now, I would let you know how we are going to proceed in the webinar. After this, you're going to listen to the recorded video of Swamiji. Then we will be having somebody live who's been a part of Parkinson's Chikitsa. After that, we are going to share the online program details. Last but not the least, Swamiji himself will be joining you live to answer your question, of course, within the limited time. So everybody take your virtual seats and let there be no disturbances so that you can give full ears to what exactly Swamiji is saying and relate to it beautifully. Thank you so much. Namaste. Over to Anilji to share the video. तो आज हम पार्किंसन और पार्किंसन से कैसे निकल सकते हैं इसके बारे में हम बात करें। लेकिन सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं पार्किंसन में, वो क्या प्रॉब्लम है? कोई भी चीज हिल रही है, मतलब कंट्रोल में नहीं है ना? कंट्रोल में नहीं है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिससे कि आपको डायरेक्टली समझ में आए कि इसको कैसे संभाला जा सकता है। तो एक एक्सपेरिमेंट हम सभी साथ में करें। सभी साथ में करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। तो एक हाथ को हिलाइए, दूसरे हाथ से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए।
कैसे करेंगे? या ऐसे ऐसे हिलाइए, या अच्छा रहेगा कि कोई दूसरा हिलाए और आप उसके हाथ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो कैसे कैसे करेंगे कंट्रोल? आप देखेंगे कि आप उसे पकड़ के सांस रोक लेंगे। उसको रोकने के लिए, उस शिवरिंग को रोकने के लिए आप सांस रोक लेते हैं। या बॉडी में भी कहीं शिवरिंग होती है तो पीछे आप देखेंगे सांस रुकता है। यानी सबसे पहली चीज, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या चीज वीक है आपके शरीर के अंदर? ओके, सो I'll speak in both English and Hindi. The first thing that anybody who has Parkinson, the person faces is shivering, uncontrolled movement. Now, to control the movement, you can do this experiment. Tell somebody to actually shake his hand or her hand, and you try to control that. How do you do that? You hold your breath and try to control it. By holding your breath, you also try to control any movement in your body. आपके शरीर में भी किसी भी मूवमेंट के लिए को कंट्रोल करने के लिए आप सांस रोक लें। सो द फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज जो आपको करनी है, यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी। द फर्स्ट थिंग दैट you need to do to actually come out of Parkinson or to handle Parkinson is increase the breath hold capacity. Breath hold capacity आप बढ़ाइए। बिना इसको बढ़ाए पार्किंसन कंट्रोल में नहीं आया। विदाउट एनहांसिंग योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, you can't just control Parkinson. There is no treatment to Parkinson. So this is the first thing that everybody has to understand. So what is breath hold known as? Breath hold को क्या बोलते हैं? Breath hold is known as Kumbhak. And we are introducing Parkinson course to come out of Parkinson Kumbhak course. Kumbhak to come out of Parkinson, that module. We are calling it Shanta Vritti. Now, Visham Vritti is Parkinson, and Shanta Vritti is the treatment for Parkinson. So this course is called as Shanta Vritti, or the Parkinson Kumbhak course. Now, first of all, when was it recognized that there is something called Parkinson? It was 120 years ago. 120 साल पहले ये पता लगा, किसी इजरायली व्यक्ति ने ये पता लगा, some Israeli person. But in 120 years, we still don't know why Parkinson happens. 120 साल के बाद भी हमें नहीं मालूम कि पार्किंसन क्यों होता है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ लिवोडोपा टुडे, डोपामीन और लिवोडोपा अगर आप देखें, इज नॉट एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इससे कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं, इज नॉट एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सो वी विल लुक एट पार्किंसन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हम पार्किंसन को एक बिल्कुल ही अलग आयाम से देखेंगे। And people who have done our course, they say they have seen changes, positive changes, and they have got lot of help. In fact, their life has changed. So how do we look at Parkinson? Parkinson को कैसे देखें? एक मैंने बताया विषम वृत्ति और शांत वृत्ति के तरीके से देख सकते हैं। उससे पहले मैंने जो एक्सपेरिमेंट करवाया, द एक्सपेरिमेंट दैट वी डिड, it was all about lack of breath hold capacity. So if you improve your breath hold capacity, the control will improve, and that's how you'll get help in Parkinson. Now, when we say Visham Vritti and Shanta Vritti, yeah, our body actually does everything in a cyclical manner. Like, for example, the movement of anything inside the body is cyclical. Like blood flow is cyclical. Even the neuron message flow is cyclical. The food flow is cyclical. If we also take into consideration the nature, प्रकृति को भी साथ में ले तो सब cyclical ही होगा। तो
पहली बात, व्हाट इज द वीकनेस इन अ पार्किंसन पर्सन? इट इज कॉल्ड एज अपान दोष। अपान दोष का वीकनेस है। इसका मतलब क्या हुआ? एनीथिंग इन योर बॉडी, इफ इट मूव्स डाउन, it moves down in a force system called apana. अगर कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है तो एक शक्ति है जिसे हम अपान कहते हैं, वो अगर बहुत अच्छी है तो ही वो ठीक से नीचे जा पाएगी। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड द प्रॉब्लम विद अ पार्किंसन पर्सन इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन पार्किंसन के पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स व्हाट? कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? आई टॉक अबाउट टू थिंग्स। यहां पे दो चीजों के बारे में बात करूंगा। वेन यू ईट समथिंग, तब आप जब भोजन करते हैं, इट हैज टू गो डाउन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक तरीके से उसको नीचे जाना चाहिए। सो पार्किंसन पेशेंट हैव दिस वीकनेस। ये नीचे ठीक से नहीं जाएगा तो आपको बावल मूवमेंट ठीक से नहीं होगा। द बावल मूवमेंट विल नॉट हैपन प्रॉपरली इफ इट डजंट गो डाउन प्रॉपरली। द फोर्स थ्रू विच इट गोज डाउन इज कॉल्ड एज अपान बल और अपान शक्ति, अपान वायु। So this apana dosha in a long term results into Parkinson. What happens if there is an apana dosh? If something is not able to go down properly, what will happen? The flow will try to reverse. पानी एक जगह अगर नहीं जा पाए तो वो पीछे आने की कोशिश करता है। कोई चीज नीचे नहीं जा पाए तो ऊपर आने की कोशिश करता है। Something which cannot go down properly will try to go up. This is called as urdhgat vayu, reversed vayu. रिवर्स वायु, रिवर्स फोर्स। इफ इट इज फॉर मेनी इयर्स, काफी सालों तक ये रिवर्स फोर्स रहेगा, बॉडी के अंदर रिवर्स फोर्स रहेगा, तो इट विल इंपैक्ट द ब्रेन। ये आपके ब्रेन को इंपैक्ट करेगा। ब्रेन इज अ क्लस्टर ऑफ नर्व्स। ब्रेन क्या है? तंतु का एक इकट्ठापना है, ठीक है ना? तो तंतु के ऊपर अगर इंपैक्ट करेगा, इफ इट इंपैक्ट्स द ब्रेन, इट विल इंपैक्ट हॉर्मोन्स विच फ्लो इन द ब्रेन। ब्रेन में जो हॉर्मोन्स फ्लो होते हैं उसको इंपैक्ट करेगा। सो द होल नर्वस सिस्टम विल गेट डिसइंटीग्रेटेड। वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। आपका नर्वस सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। नाउ यू विल हैव टू इंटीग्रेट इट बैक। बट वॉट वी आर सीइंग, हम क्या सोच रहे हैं? बिकॉज देर इज स्केर्सिटी ऑफ डोपामिन, डोपामिन की कमी हमको दिखेगी ब्लड में, तो हम क्या कर रहे हैं? डोपामिन डाल रहे हैं। बट वाई देर इज अ स्केर्सिटी ऑफ डोपामिन? डोपामिन की कमी क्यों है? वी डोंट नो। सो आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं क्यों कमी है। बिकॉज दिस ऊर्ध्वगत वायु इज इंपैक्टिंग द ब्रेन। ब्रेन को हमेशा डिस्टर्ब कर रहा है, हिला रहा है वो, और वहां पे जो हार्मोनल फ्लो है, इट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। नाउ इफ यू सी द सिम्टम ऑफ अ पार्किंसन पेशेंट, तो आपको पता चलेगा कि सी देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन द ब्रेन, द मास्टर ग्लैंड। वही आपके सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन पे इंपैक्ट है तो आपके सारे हॉर्मोन्स पे इंपैक्ट आएंगे। सो आप क्या देखेंगे? व्हाट ऑल यू विल बी एबल टू सी? इम्बैलेंस इश्यू। बैलेंस कहां से आता है? कॉक्लिया है ना, कान के अंदर नर्व का बंडल है, जैसे नर्व बंडल का कॉक्लिया, फ्लूइड फिल्ड नर्व बंडल। द प्रेशर इज नॉट प्रॉपर, एंड इफ द प्रेशर इज नॉट प्रॉपर देयर, द बैलेंसिंग विल नॉट हैपन प्रॉपरली। बैलेंसिंग प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। लाइट हेडेडनेस आएगा अपॉन स्टैंडिंग। खड़े होंगे तो चक्कर आ जाएगा, ब्लैकआउट, समटाइम्स ब्लैकआउट विल हैपन। तो क्या है? इट इज इंपैक्टिंग द ब्रेन, इट इज इंपैक्टिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड,
and the hormones which are released across the body in the brain also. So if you do not integrate the whole brain back, if you don't integrate the things back, तो वो इंटीग्रेशन के बगैर ये चीज ठीक हो ही नहीं सकते. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन फॉर इट. मैं आपको साफ बता देता हूं, देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन फॉर पार्किंसन. सो दैट इज व्हाई वी मेक people do tantu bandh kumbhak. To integrate the whole nervous system, we make them do tantu bandh kumbhak. आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं? कैन वी डू सम एक्सपेरिमेंट? कैन वी डू सम एक्सपेरिमेंट? हाँ, अगर कोई आपको दोनों हाथों से खींचने की कोशिश करे, somebody is trying to pull you from both the sides and you are trying to pull them both towards yourself, you are integrating yourself. How do you do it? कोई बहुत जोर से खींचिए अपनी तरफ में. हाउ डू यू डू? करके देखो, ट्राई इट आउट, है ना. अपने हाथों को ऐसे रखिए और ऐसे जस्ट इमेजिन टू पीपल आर पुलिंग दीज हैंड्स ऑन देयर साइड टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड एंड यू आर ट्राइंग टू पुल इट बैक. हाउ डू यू डू? बहुत टाइट से करके देखो. यू होल्ड योर ब्रेथ. वो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन योर बॉडी? आपके शरीर में वो कौन सी चीज है जिससे आप वापस इंटीग्रेट करते, इकट्ठा करते हो? इट इज ब्रेथ होल्ड. बिना सांस रोके आप इकट्ठा नहीं, इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपने आप. सो द मोर यू प्रैक्टिस दिस कुंभक, तंतुबंध कुंभक, the more your body will get integrated, your brain will also get integrated. To integrate the and to normalize the flow in the brain, we give you a specific mantra. आपको हम एक मंत्र देते हैं, and the mantra is breath mantra. हाँ, शांत. विवृत्ति means cycle. शांत means easy. Haphazard cycle is a different. Visham vritti cycle. Visham vritti is not in proper flow. Shanta vritti means in proper flow. We give you a mantra, a breath mantra. You do it with your breath to make your cycle easy. Acha. So that is why what we are saying is, without Kumbhak, Parkinson cannot be treated. You can't treat Parkinson without Kumbhak. Kumbhak के बगैर Parkinson को ठीक किया ही नहीं जा सकता. Whatever the situation, कितना भी खराब situation हो, if you want your life to be empowered, to be good, better, you'll have to practice Kumbhak. Now in this we also use a practice in Apana Sthapana practice with some weight. वेट के साथ भी हम थोड़ा सा वेट धीरे धीरे स्टार्ट करके उसके साथ में हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं. And as you go ahead, you'll see you will have more strength in your body. That means जो आपका मसल का इशू आता है, मसल के इश्यूज, मसल स्टिफनेस जो आपकी आती है, मॉर्निंग मसल स्टिफनेस, वो भी आपकी निकल जाएगी. बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, यू विल हैव मोर कंट्रोल ओवर योर बॉडी. द बैलेंसिंग प्रॉब्लम विथ कुंभक, बिकॉज कुंभक इज ऑल्सो द करेक्टिंग द प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी. आयुर्वेद में इसको हम वात बोलते हैं. So how can you correct the vata or the pressure ecosystem? The only way to correct vata through yourself, by yourself, through your body is breath hold or kumbhak. तो वात को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? कुंभक. There can be medicine which also helps in controlling vata, and you can also take support of that, but then it will not increase your body's capacity. कोई भी दवाई आपके शरीर की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती. ये बात समझिए. किसी भी दवाई से आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज ठीक नहीं कर सकते. देयर इज नो एविडेंस इन द लास्ट 100 years that any chronic disease has become fine by taking chemical or
नॉन केमिकल मेडिकेशन। एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ 100 साल में, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक नहीं हुआ, इट हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। थायराइड इज इंक्रीजिंग, 30 years बैक देयर वाज नो थायराइड। एंड न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, है ना, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैंसर इज इंक्रीजिंग एट एन एपिडेमिक रेट, एंड इट विल बिकम एन एपिडेमिक इन 15 to 20 years। 15-20 साल में कैंसर जो है एपिडेमिक ही बन जाएगा। तो नो मेडिसिन हैज बीन एबल टू क्योर पार्किंसन ऑल्सो, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर पाया। नाउ वात इज प्रेशर, pitta is temperature, and kapha is material management. Kumbhak is the most powerful method to control vata. And if you use some external medicine, natural medicine, it will be like सोने पे सुहागा कहते हैं ना, it will become like more effective. Now, because the movement is not proper, so drooling or difficulty in swallowing, खाने में difficulty, क्योंकि वायु जो है वो एक तरीके से मूवमेंट जो है प्रॉपर नहीं। सो वी ऑल्सो गिव यू कस्टमाइज प्रैक्टिस। सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम विथ वन पर्सन इन मोर इन सोलोइंग, सो द पर्सन ऑल्सो हैज नाग दोष, फिर हम उसको नाग कुंभक भी अलग से देते हैं। सो वी कस्टमाइज योर मॉड्यूल ऑल्सो। अच्छा, इसके अलावा वीकनेस, 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 फटीग, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाउ इफ यू हैव एनर्जी इन द बॉडी, आपके शरीर में अगर एनर्जी है ज्यादा, तो द बॉडी विल रिकवर ऑल्सो थ्रू दैट एनर्जी, अपने इसको बॉडी रिकवर करेगा। सो वन थिंग दैट आई वांट टू से टू एवरीबॉडी, दैट इट इज ओनली योर बॉडी विच रिकवर्स इटसेल्फ। केवल आपका शरीर ही आपको रिकवर कर सकता है। इवन इफ ईश्वर कम, भगवान आ जाए ना, तो भी आपको ठीक नहीं करता। So increasing the energy in the body is a must. So we have done the world's first scientific experiment correlating Kumbhak with mitochondria health. Mitochondria क्या है? आपके कोशिकाओं में एक एनर्जी पावर हाउस है। इट्स अ पावर हाउस ऑफ योर सेल। तो in 4 weeks of Kumbhak, the scientific experiment says the mitochondria health improves drastically. 4 हफ्ते कुंभक करने से ही माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ बहुत बढ़ जाती है, यानी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ फटीग, अगर फटीग से निकलना चाहते हैं, कुंभक इज अ मस्ट। और दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो इफ यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, यू विल बी एबल टू पुश समथिंग बेटर। आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आप पुश कर पाएंगे किसी चीज को अच्छे से। तो पुश करके देखते हैं। ठीक है ना, पुश पुश करके देखते हैं। लेट्स पुश। एक हाथ ऐसे रखिए, सभी करेंगे, सभी करेंगे। लेट्स पुश, पुश हार्ड। तो ये पुश करने की एनर्जी आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर? हाउ डू यू प्रोड्यूस दिस एनर्जी फॉर पुशिंग फ्रॉम द बॉडी? व्हाट इज द ट्रिगर? ट्रिगर क्या है? पीछे देखेंगे, सांस रोक के। सो एनर्जी प्रोड्यूसिंग ट्रिगर इज योर ब्रेथ होल्ड और कुंभक। कुंभक आपके बॉडी का एनर्जी प्रोड्यूसिंग ट्रिगर है। एंजाइटी ओनली हैपन्स इफ यू हैव लैक ऑफ एनर्जी। आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, तभी एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन मीन्स यू आर इन अ स्टेट वेयर देयर इज नो एनर्जी इन योर बॉडी, आपके शरीर में एनर्जी फील ही नहीं होगा। सो अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विच सेज कुंभक इंक्रीजेस माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ एंड इंप्रूव्स एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी इन द बॉडी। तो ये चीजें, फटीग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब खत्म हो जाएगा। लो वॉल्यूम होता है, हाइपोफोनिया, लो वॉल्यूम जाएगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी। कॉग्निटिव चेंजेस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी एंड द डिसइंटीग्रेटेड नर्वस सिस्टम, है ना। कॉग्निशन, मेमोरी भी अगर देखा जाए इसके साथ में आएगा। सोचने में स्लोनेस, स्लो थिंकिंग,
So these two things together, energy and integration of the nervous system, will improve memory. Memory, हमारे पास में बहुत एग्जाम्पल ऐसे. There are a lot of people, they had memory loss, and after doing Kumbhak, their memory came back. I'm myself is an example. मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं उसमें. Urinary problem, because the flow is not proper, the pressure is not proper. आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं है. कुंभक करने से प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होगा. योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट थिंग्स प्रॉपरली. रीजेनरेटिव लॉस है, ये रीजेनरेटिव वीकनेस है आपके बॉडी में. न्यूरो रीजेनरेशन नहीं हो रहा. तो योर मेटाबॉलिज्म विल इंप्रूव. इट विल इंप्रूव द व्हाट यू कॉल एज जठराग्नि. कुंभक से ही पित्त निर्माण होता है. Because of pressure, the temperature also increases. So your digestive strength will improve. Regenerative strength will also improve. It will also improve your what you call as immune factor, है ना, उसको भी ये improve करता है. एंड पंचतत्व दोष निवारण जो है, ये आप देखेंगे द पंच भूत और पंचतत्व दोष निवारण. The one of the panchabhuta is akash, vayu, second agni, jala, and prithvi. So because of the pressure ecosystem, which is akash, pressure ecosystem, and vayu, या आकाश वायु मिलेगा तो pressure ecosystem बनेगा. कुंभक correct the pressure ecosystem, thereby correcting everything else below, है ना. तो सुनने में किसी को दिक्कत है, इट इज आकाश दोष, है ना. आकाश दोष, आकाश और वायु दोष दोनों मिलके ये प्रॉब्लम करते हैं. इफ देयर इज अ हियरिंग प्रॉब्लम एंड अदर प्रॉब्लम लाइक टेस्ट प्रॉब्लम, है ना, डाइजेशन प्रॉब्लम, देन द होल व्हाट यू कॉल एज द वाटर बैलेंस ऑफ योर बॉडी एंड द स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ योर बॉडी, ये सारा कुंभक से ठीक होता है. Now, I've taken all the problems, sleep problem, insomnia, restless legs, है ना. तो insomnia, if you see why insomnia is happening, I'll take an example of a balanced moving vehicle. एक बैलेंस में गाड़ी चल रही है, आप खड़े हैं, you don't have to hold anything. आप किसी चीज को पकड़ेंगे नहीं, you will be in balance. But if the road is not good, what will happen? You will catch hold of something. So because of the flow, the cyclical flow in the body is not proper, body is trying to hold on to it. अंदर आपका शांत नहीं होंगे. शांत नहीं होंगे तो नींद नहीं आएगी. टेंशन में नींद नहीं आती, अशांति में नींद नहीं आती. शांत वृत्ति. दैट इज व्हाई द प्रोसेस which are given in this program will create a shanta vritti, and then you will be able to sleep. उसके बाद फिर आप सो पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हम क्या क्या और करवाते हैं, व्हाट ऑल वी मेक यू, देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी गिव इन दिस प्रोग्राम. अभ्यंगा, specific oil combination, how to massage on your body, which side and how to massage, ये बताते हैं. What are natural support you can take to come out of constipation and all these issues, वो हमको कर्णपूरण, गंडूश, ये सारी चीजें भी इसके अंदर हम बताते हैं. We tell you about कर्णपूरण, गंडूश, अभ्यंगा. Then apart from that, what all we teach in this program, हम और क्या सिखाएंगे आपको? We'll teach you Anganyasa, the Vata Anganyasa. We'll teach you a part of Vata controlling process, है ना. Marma Vinyasa, Vata Marma Vinyasa will teach you. So वात वाला पार्ट, कुछ वात कुंभक, हम प्रकृति शूल कुंभक वात के लिए आता है, वो हम सिखाएंगे इसके अंदर. वात वाला पार्ट कुछ और भी, अपार्ट फ्रॉम अपान स्थापना, है तंतुबंध कुंभक, मंत्र, मंत्र दीक्षा, एंड
वायु, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वायु, विल ऑल्सो गिव यू अ वैद्य सपोर्ट, है ना। आयुर्वेदिक वैद्य सपोर्ट भी हम आपको देंगे इसके साथ साथ। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझनी पड़ेगी दैट without empowering your body, you can't come out of Parkinson just by taking external support or medicine. बाहरी दवाइयों से, किसी भी तरीके की दवाई में और एक्सटर्नल सपोर्ट से आप इससे नहीं निकल सकते। कुंभक is a methodology to empower your body, to empower your system, to empower your mind. And by doing Kumbhak, thousands and thousands of people have been able to reverse their problem, or at least become independent and come out of most of the symptoms. तो ये बहुत ज़रूरी है हर एक की लाइफ में। इनफैक्ट पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, अगर हमें शरीर को सुदृढ़ और एम्पावर करना है, इफ यू वांट टू एम्पावर द ह्यूमन बॉडी विच इज गोइंग टुवर्ड्स डिसएम्पावरमेंट एंड वीकनेस, कुंभक has to happen in everybody's life. थैंक यू। अब आगे आपको थोड़ा प्रोग्राम के बारे में और बता देते हैं। Thank you so much for listening to Swami ji patiently. Now I would like to request, just a sec. Vijay Sharma, sir, to please share his journey of Parkinson's. Thank you so much, Vijay sir, and a happy new year. नमस्कार मैडम। नमस्कार। प्लीज बताएं ब्रीफली कि क्या था आपका कंडीशन जब आप प्रोग्राम ज्वाइन किए थे, और कैसे कैसे धीरे धीरे आपको अपने सिम्टम्स में रिलीफ मिला। क्या क्या मैं डाउट्स थे विजय आपके शर्मा। मन में जब आप ज्वाइन किए थे, वो सब भी थोड़ा अगर पार्टिसिपेंट्स को बताएं तो अच्छा रहेगा। मैं विजय शर्मा बठिंडा पंजाब का रहने वाला हूँ। मुझे पिछले 3 साल से पार्किंसन की प्रॉब्लम है। मैंने फेसबुक पर देखकर एक ऑनलाइन वेबिनार अटेंड किया था, जिसमें स्वामी राजविभू जी ने कुंभक के बारे में बताया कि पार्किंसन जैसी लाइलाज बीमारी को भी कुंभक से ठीक किया जा सकता है। इससे प्रभावित होकर मैंने अवीसा द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन बैच नंबर 12 शांतवृत्ति पार्किंसन प्रोग्राम, जो कि कुंभक के पर बेस्ड है, ज्वाइन किया, जो 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है। इस प्रोग्राम में हमारे मेंटर रंजना मैम और स्वामी जी ने बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग मेथड से हमें क्रिया के बारे में बताया है और कुंभक की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। रंजना मैम हमारे मेंटर जो हैं, उनकी ओर से बहुत ही रोचक माहौल में प्रैक्टिस सेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें रंजना मैम का स्माइलिंग फेस और एनर्जेटिक वे ऑफ टीचिंग हमें बहुत प्रभावित कर रहा है। हम मोटिवेट और इंस्पायर हो रहे हैं। 2 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपनी फीलिंग और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी हैंडराइटिंग, जो कि पार्किंसन की वजह से बहुत छोटी और बहुत खराब हो गई थी, उसमें सुधार आना शुरू हो गया है। मेरा दायां हाथ, जो कि बहुत स्लो हो गया है, इसमें धीरे-धीरे सुधार महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी बॉडी में पहले से थोड़ा-सा ज़्यादा एनर्जी लेवल महसूस कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि रेगुलर प्रैक्टिस करने से आने वाले दिनों में मुझे और भी सुधार मिलेगा। मैं स्वामी जी का, रंजना मैम, अवीसा की पूरी टीम का इस वंडरफुल प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पार्किंसन जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए हमें आशा की किरण दिखाई है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद विजय सर, आपका आज यहाँ आने के लिए हम सब लोग आभारी हैं। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट अनिल जी टू प्लीज शेयर द ऑनलाइन प्रोग्राम डिटेल्स विद आवर पार्टिसिपेंट्स। Thank you, Rajvibhu. Just give me a second and I'll share my screen.
So let us get to know the online Kumbhak therapy details now. काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे प्रोग्राम डिटेल्स के लिए, जल्दी से जान लेते हैं. द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज शांत वृत्ति. जैसा कि स्वामी जी ने बताया है वीडियो में भी, प्रोग्राम का नाम है शांत वृत्ति, जो पार्किंसंस के लिए है. इट्स अ गाइडेड प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड ऑनलाइन बाय ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स. दिस इज द फर्स्ट थिंग. जो आपकी क्लासेस होंगी वो कुंभक मेंटर्स हैं, जो स्वामी जी द्वारा ट्रेंड है, उनके द्वारा ये क्लासेस कंडक्ट की जाए. द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज 10 वीक्स. पूरे प्रोग्राम की जो अवधि है 10 हफ्ते की है. 2 लाइव क्लासेस विल बी कंडक्टेड पर वीक, एंड सिंस देयर आर 10 वीक्स, so there will be a total of 20 classes. हर हफ्ते 2 क्लास होंगी 10 हफ्ते के लिए, तो टोटल 20 क्लास होंगी. बाकी जो दिन रहेंगे हफ्ते में, उसमें खुद प्रैक्टिस करनी होगी. द रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन. देन यू विल हैव एक्सेस टू द क्लास रिकॉर्डिंग फॉर 12 मंथ्स. जो भी ये क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो अपलोड कर दी जाएंगी आपके कोर्स डैशबोर्ड में, और इसका आपके पास एक्सेस रहेगा 12 महीने, ताकि आप एक एक चीज अच्छे से दोबारा देखकर समझ सके. You'll be able to replay all these recordings and know each and everything in detail in a very correct way, so that you can practice accordingly. Then there'll be written instructions also in English and Hindi, which you can download and take a print also. ये लिखित निर्देश भी होंगे जो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं, और ये आपके तब बहुत काम आएंगी जब मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट की स्पीड कम है, या इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं है. तो अगर आपके पास ये लिखित निर्देश रहेंगे तो आप डेली प्रैक्टिस होती रहेगी. These written instructions, they'll come very handy when you're traveling, or when the internet speed is low, or when the internet is not there at all, uh, because that time your videos will not play properly. So if you have the written instruction, you won't miss any day of your practice. Then this is the most important part of the support system that we provide, because it's an online program. So this is the place where you'll be asking your doubts, your questions on a daily basis. क्योंकि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो आप खुद जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस समय आपके मन में कोई सवाल आता है, कुछ डाउट आता है आपके मन में, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने पूछना है. और ये डाउट तब आना शुरू होंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करें. राइट. तो एक एक डाउट जो भी है क्लियर करते जाएंगे, और आपके जो मेंटर्स हैं इसी ग्रुप में ऐड होते हैं, तो आपके एक एक डाउट क्लियर करेंगे, हर एक सवाल का जवाब देंगे, और स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बताते रहेंगे. योर मेंटर्स विल बी देयर इन दिस प्राइवेट व्हाट्सएप क्लास ग्रुप. So any question that you ask, any doubt you ask, they'll clarify everything. They'll answer every question, and they keep you guiding you in a step-by-step manner. That's why this is the most important part. And then this is the magic of this therapy. ये इस थेरेपी का जादू है. प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. इस डायग्नोसिस से स्वामी जी आपकी बीमारी की जड़ तक पहुंच पाते हैं, और ये अपने आप पे अनूठा डायग्नोसिस है. इट्स अ यूनिक डायग्नोसिस एंड वन ऑफ इट्स काइंड ऑन द होल प्लेनेट. पूरी दुनिया में ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं है, और अनूठा इसलिए है क्योंकि ये नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है. दिस इज यूनिक डायग्नोसिस बिकॉज इट्स अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस, एंड सेकेंडली इट्स एन ऑनलाइन डायग्नोसिस. तो दूसरी ये बात है कि ऑनलाइन में ही होता है. अब दोनों ही बातें अजीब सी लग रही होंगी ना आपको, कि नॉन मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, ऑनलाइन में कैसे हो सकता है, व्हाट इज अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस एंड हाउ कैन इट बी डन ऑनलाइन. लेट मी एक्सप्लेन. मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि कैसे होता है. You'll get a link to a form, and you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions, and note the observations in this form. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, और एक कुछ एक्सपेरिमेंट करने को कहा जाएगा आपको अपनी सांसों के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर, और जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे इस फॉर्म में लिखें. सेकेंड, यू विल बी राइटिंग अबाउट ऑल योर हेल्थ इश्यूज इन डिटेल इन दिस फॉर्म. दूसरा जो काम करेंगे, इस फॉर्म में अपनी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं डिटेल में लिखेंगे इस फॉर्म में. And third, you will be required to upload a selfie photograph, shoulder and above, in which the face should show very clearly, but there have to be no specs on the eyes, and in case of ladies, no makeup also. तीसरी जो चीज करेंगे इस फॉर्म में, एक सेल्फी फोटो अपलोड करेंगे जिसमें चेहरा क्लियर दिखता हो, लेकिन आंखों पर चश्मा ना हो, बट लेडीज के केस में कोई मेकअप भी ना हो. When these three things reach Swamiji, he is able to determine the week
functional strength in your body due to which you have landed in your current conditions. जब ये तीनों चीज स्वामी जी के पास पहुंचती हैं तो स्वामी जी पता कर पाते हैं कि कौन सी आपकी शरीर में शक्तियां कमजोर हो गई हैं, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारा जो शरीर है, कुछ शक्तियां होती हैं शरीर शरीर की, तो उसके द्वारा चलता है। तो इससे वो पता कर पाते हैं कि कौन सी शक्ति कमजोर हो गई है जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ गए। ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस है। देन बेस्ड ऑन योर प्राण शक्ति डायग्नोसिस, योर थेरेपी विल बी कस्टमाइज्ड इन द 11th or 12th week, which means everybody gets a separate personal customization. 11वें या 12वें हफ्ते में आपकी थेरेपी को स्वामी जी कस्टमाइज करेंगे और आपको स्पेशल प्रैक्टिस मिलेगी आपके प्राण शक्ति डायग्नोसिस के आधार। वो सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए पार्किंसन के 20 पेशेंट हैं, सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं। रूट कॉज कैन बी डिफरेंट इवन इफ द डिजीज इज द सेम। दैट्स व्हाई इट्स अ कस्टमाइजेशन that is done in the 11th or 12th week. Patil sir, please don't scribble on the screen. It creates disturbance unnecessary. Please hold back. Then, what are the class started? कब class start हो रही है? 13 January, batch 18 is starting at 7 p.m. 13 जनवरी को शाम 7 बजे का बैच है। On 27th January, बैच 19 is starting at 7 a.m. ये सुबह का बैच है, 27 जनवरी को जो शुरू होगा मंगलवार के दिन। तो जो भी आपको सूटेबल टाइम है वो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। विच एवर टाइम इज सूटेबल यू कैन ज्वाइन दैट बैच। नाउ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, कुंभक इज समथिंग विच इज न्यू टू देम, although it is thousands of years old, as old as Ayurveda itself, because the Kumbhak that you will be learning in this program is a part of Ayurveda and not yoga, because Kumbhak is used in yoga also, but the Kumbhak that you will be taught in this program is a part of Ayurveda. So for most people it is something new, and Swamiji is reviving this knowledge which has been lost from Ayurveda. So that's why not many people have heard about it. ज्यादातर लोगों के लिए कुंभक नई चीज है, जबकि ये हजारों साल पुरानी है, जितनी पुरानी आप समझते हैं आयुर्वेद है। क्योंकि इसमें जो कुंभक सिखाया जाएगा वो आयुर्वेद का पार्ट है, आयुर्वेद का कुंभक है। क्योंकि कुंभक योगा में भी इस्तेमाल होता है, तो योगा वाला कुंभक नहीं है, ये आयुर्वेद का पार्ट। तो आप कोई भी नई चीज या पहली बार सुनते हैं, नई तो नहीं है कहेंगे इसको, पहली बार अगर सुन रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो एकदम जायज सी बात है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आप गूगल रिव्यूज पर जाकर पढ़ सकते हैं। यू कैन गो टू गूगल and type Avisa healing, and you'll be able to see more than 300 testimonials, and with an average star rating of 4.8, which is considered very high. आप गूगल पर जाइए, अवीसा हीलिंग टाइप करेंगे तो हमारा तो गूगल पेज आ जाएगा, उसमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। आप जाइए, पढ़िए, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे अवीसा हीलिंग, एक ग्रीन कलर का लोगो है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें लगभग 3000 के आसपास वीडियोस हैं। आप चाहिए, देखिए, समझिए, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें मिल सके। तो व्हाट्स द कोर्स फीस? कोर्स फीस क्या है उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दो ऑप्शन है। देयर आर टू ऑप्शन, वन ऑन वन प्रीमियम क्लासेस एंड ग्रुप क्लासेस। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस, दोनों में फर्क है उसकी भी मैं बात करूंगा। इन वन ऑन वन देयर विल बी वन इंस्ट्रक्टर वन पार्टिसिपेंट। वन ऑन वन जो है उसमें एक इंस्ट्रक्टर रहेंगे, एक पार्टिसिपेंट है डेडिकेटेड आपके लिए। इसकी फीस 60,000, 30,000 बिफोर स्टार्टिंग, 30,000 आफ्टर 1 month. If you pay in a single shot, this is just 50,000. Now for group classes there will be multiple people, about 30-35 people will be there, so the fees is very low. Fees is 21,500. But there's a special fee that we announce, which is 12,000 only, and this is an EMI plan. ये स्पेशल वेबिनार फीस हम अनाउंस करते हैं, 6,000 बिफोर स्टार्टिंग, 6,000 आफ्टर 1 month. These are for group classes. What if you pay the fees in a single shot? अगर आप इस सिंगल शॉट पे पेमेंट करते हैं तो और भी ज्यादा इसमें डिस्काउंट हो जाता है।
और वो कितना है, लेट अस सी, जस्ट 849, 8500 के आसपास ये आपको पूरा फीस आता है। पूरा प्रोग्राम की कॉस्ट यही होती है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सभी लाइव क्लासेस हैं, डेली सपोर्ट है, रिकॉर्डिंग्स हैं, कस्टमाइजेशन है, सब कुछ इसी के अंदर। और लेकिन सीट क्योंकि लिमिटेड होती है तो ये सिर्फ 2 दिन तक ऑफर हम दे सकते हैं, यानी कि 10 जनवरी तक। दिस ऑफर इज वैलिड टिल 10 जनवरी 12:30 PM, दोपहर 12:30 बजे। तो अगर आप कुछ आपके डाउट्स हैं तो अभी तो स्वामी जी आने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप वेबिनार के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। हाउ टू एनरोल, कैसे एनरोल करना है? फर्स्ट स्टेप इज टू पे द प्रोग्राम फी। अब पहला जो इसमें स्टेप है वो फी पे करने का है। उसके बाद अपनी पेमेंट रिसीप्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे आप। ये वही व्हाट्सएप ग्रुप है जहां से आपको इस वेबिनार का लिंक मिला है। दिस इज द सेम व्हाट्सएप ग्रुप where you got the link to attend this webinar. Step 3 is to fill the participant onboarding form, which Neha or Jhansi from our team, they will send you. And they will send you another link to join the class WhatsApp group. After putting your receipt in the group, you just mention whether you want the evening match or the morning match, and they will send you that class group join link. आप जब अपनी रिसीप्ट शेयर करेंगे वहां पर मेंशन कर देंगे कि आपको सुबह का बैच चाहिए या शाम। तो उसी तरीके से नेहा या झांसी आपको उसी क्लास ग्रुप का लिंक भेजेंगे, उसी बैच का। एंड देन स्टेप 5 इज टू स्टार्ट अटेंडिंग शांत वृत्ति क्लासेस। और स्टेप 5 में आप अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे, शांत वृत्ति क्लासेस। सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है। दीज आर द पेमेंट मेथड। ज्यादातर आजकल जो आप देखते हैं ऑनलाइन में, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जीपे, यूपीआई। इफ यू डोंट यूज एनी ऑनलाइन मेथड, you can go to the nearest branch of ICICI Bank and pay into our bank account. अगर आप ऑनलाइन तरीके इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप नजदीकी आईसीआईसी की ब्रांच में जाकर हमारे अकाउंट में कैश भी डिपॉजिट करा सकते हैं। फॉर इंटरनेशनल पेमेंट यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड, पेपैल अकाउंट और अ साइट कॉल्ड wise.com. Now this is the world class support team which will make sure that you are able to do this program. ये सुनिश्चित करती है, ये टीम है बैकएंड में रहती है, ये सुनिश्चित करते हैं कि आप ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है तो काफी लोगों को डाउट होता है कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन में कैसे होता है, ऑफलाइन में होता तो बहुत अच्छा होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम पिछले 4 साल से ऑनलाइन थेरेपीज करवा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। 10,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी कुंभक थेरेपी कर चुके हैं। तो हम इसके एक्सपर्ट्स हैं, वी आर एक्सपर्ट्स एट ऑनलाइन थेरेपी। सो यू नीड नॉट वरी हाउ द प्रोग्राम विल बी conducted, whether you'll be understanding or not. That's our responsibility to make you do the program effectively so that you get great benefits out of this. ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हम ही ऑनलाइन में करा पाए, क्योंकि हमने 10,000 लोग को ऑलरेडी करा चुके हैं ये वाला प्रोग्राम कुंभक थेरेपी। तो अब उसकी बिल्कुल चिंता ना करें कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप बस इस पे ध्यान दीजिए कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करें। बाकी सब हमने ध्यान रखा हुआ है। कौन कौन है टीम में? टीम में है रचना शिमा बोथरा, वो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, शाली भागवत क्लास मैनेजर, नेहा सानवी एनरोलमेंट इंचार्ज है, मैनेजर आईटी अश्विनी। देन टीम है मेंटर्स की रंजना, टोनी, अरुणा, मीना, हीरा, सुषमा, मानवी, अंजलि, गंगा, अरिजीत एंड विवेक। इसमें से 3 जो हमारे मेंटर्स हैं वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं और बाकी जो है वो डोमेस्टिक या जो इंडिया के हमारे बैचेस होते हैं उनको देखते हैं। टेक्निकल में शीतल है। शीतल इज द पर्सन हु विल हेल्प यू इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। इफ यू, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, अगर वीडियो नहीं प्ले हो रहा है, तो इन सब बातों के लिए शीतल आपकी हेल्प करेंगे। पर्सनल सपोर्ट में अनीता है। Anita calls each and every participant on the phone to find out how your program is going on, if you are able to understand everything or not. So she takes care of every participant and talks to every participant on the phone. ये फोन पर सभी से बात करती हैं अनीता, ये जानने के लिए कि आपको सब समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है।
ताकि हम अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो हम उसको दूर कर सकें. WhatsApp admin Anil Chauhan, that's me. I, along with Rachna ji and Neha, will be answering all your questions after the webinar in the WhatsApp group. Because due to limited time in the live webinar, Swamiji may not be able to answer or take up all questions. So if your question is not taken or answered, don't worry at all. Just post the same question in the WhatsApp group and we'll answer each and every question after the webinar. अगर आपका सवाल अभी नहीं लिया जाता है क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी रहती है लाइव वेबिनार में, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें. आप वही सवाल ग्रुप में डाल दें, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हम एक एक सवाल का जवाब देंगे. कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जिसका जवाब ना, और वो भी डिटेल में. And with this, I come to the end of my part of the presentation. Thank you and namaskar. I hand over the webinar back to Rashmi. Thank you so much, Anilji. So we would request everybody, I've enabled the chat to please write down their questions, and Swamiji will be joining us shortly. Anilji, just 2 minutes. I'll just give a call to Swamiji and In the meantime, let me take up questions which I can answer and leave the rest for Swamiji. Will it help to cure Parkinson? That's what it is all for. It's for that only. Please type your okay. My father's left hand totally doesn't work. Will it cure? Yeah, see, definitely he'll surely get some benefits because, like a lot of people ask if it can be reversed 100%. Nothing gets reversed 100%. But even if it gets reversed to 20%, 30%, 40%, 50%, that's a big difference that it makes in the overall lifestyle. 10, 20, 50% भी होता है तो भी बहुत बड़ी बात है without using any medicines. Will cure autism. Autism, it depends on the age. If the age of the patient is below 16 years, then there's a separate program. And if the age is above, then there's a separate program for it. You can get in touch after the webinar. You can write in the WhatsApp group also, and we'll take care of that. Suman ma'am is writing, I want to join as my husband is suffering from Parkinson. Is it possible? Yes, yes. Lot of patients, they get an assistant with them to understand things and then make the patient do all the prayers. Absolutely possible. And we encourage this also, that some family member can help, join along with the patient and make them do. Will it help to cure Parkinson patient? Mishita ma'am, yes, that's what the program is for. Sarika, will this also be helpful for neuropathy, essential tremor, anxiety tremor? We need more details from you, Sarika ma'am, to understand, because we have another program by the name of Ashtang Chikitsa, which takes care of all other types of neuromusculoskeletal problems. Please write the same question in the WhatsApp group and we'll get in touch with you. Can Kumbhak is effective as DBS surgery done? Yes, yes. A lot of patients that we get, they've undergone surgery, but of not much use. So this is effective even after surgery. मुझे एसेंशियल ट्रेमर जिसके कारण एंजाइटी ओवरथिंकिंग होता है. विमल सर, विल नीड मोर डिटेल्स. आपके थोड़े और डिटेल्स चाहिए होंगे. आप ये सेम सवाल ना ग्रुप में डाल दीजिए ताकि उसके बाद वेबिनार के बाद हम आपसे वो डिटेल ले सकें और आपको सही से गाइड कर सकें.
Harpreet ji is asking, what is the difference in course program between one-on-one and group? Course program is the same. It's only that you get one mentor for yourself, dedicated one mentor. Otherwise, the course content are the same. Many times, uh, some of the Parkinson's patients, they are not able to participate in a group class, so they can opt for that. Otherwise, the course details, course material is the same. No difference at all. Will it help in regaining balance in walking? Absolutely. Yes, that's what the program is for. Will it cure autism mentally challenged? Please get in touch after the webinar. You can post the question in the WhatsApp group. We'll guide you accordingly. All right. The next question is Samsung. I'm suffering from disc bulge. I have injury in L4, L5. It's too much pain. I'm 30 years old. How will I come back? Samsung SMA. There's a separate program for it, Ashtang Chikitsa. So if you can leave your number here, or if you are in the WhatsApp group, we'll be able to guide you. Please ask the same question in the WhatsApp group. There's a separate program for this. Duration for class. Duration of class is about 45 to 60 minutes every class. Ranjit A. I have been diagnosed with autonomic dysfunction. Can this help? Yes, absolutely. Kumbhak is all about bringing back the balance. And that comes when your internal organs are functioning properly, because something has gone weak. The organs have become weak and they are not able to do their function. So Kumbhak is all about reestablishing the function, reestablish the balance. 1-to-1 की टोटल फीस में क्या कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है? वो ऑलरेडी एडजस्टेड है मैम, सुमन मैम. I have tremors in my hands when I concentrate to do something, not sure if it is Parkinson. Vishali ma'am, please type your same question in the WhatsApp group and we'll get some more details from you and then we'll guide you to the right group. Sarika ma'am, will this be helpful for neuropathy, essential tremor, anxiety tremor? Sarika ma'am, same thing. Please post in the WhatsApp group and we'll require some more details from you, which we'll be able to send to Swamiji. So then we'll guide you to the right program. First, there's another program, Ashtang Chikitsa, which takes care of all the neuromusculoskeletal problems. This is specifically for concerns. Samsung, I'm suffering. We've taken this question. Rajiv Inamdar, could you kindly send the details of the various program options with dates and prices on email or WhatsApp? Yes, we have already shared in WhatsApp group. Rajiv ji, we have already shared in the WhatsApp group. Samsung SMA user. बहुत बार आपने पोस्ट कर दिया क्वेश्चन, we've answered. Will it cure tinnitus? Varada ji. For tinnitus, the program I'm talking about is Ashtang Chikitsa. Please post the same question in the WhatsApp group and we'll get you the details of that program. Tulkia Dhamija, I'm attending for my dad. Recently, he has met with brain stroke while being a Parkinson's patient. He's 76 years old. For a few years, around 5 years after detection, now his left side is quite weak and he's not full assistance with RT as well. Since the swallowing ability is completely gone, is the group going to be highly up to him and what is the time duration of each of the classes? Yes, this is definitely going to help and duration of each class is 45 to 60 minutes per class. Are there any videos before and after the Kumbhak therapy? Yes,
there's a lot of videos. You'll be able to find them on our YouTube channel. We'll share the link of the YouTube channel also. Baby Gomati, I'm a female aged and living in Chennai. Could you direct in Tamil because I couldn't see understand Hindi and know little bit. Uh, I'm sorry, we just communicate in Hindi and English. So as of now, we don't have that facility. But if you can just leave your number and if you can just post your question in the WhatsApp group, uh, because I think we will be starting one in Tamil also, but not right now. So Shadri ji, father cannot hold his breath. See, even when we are getting up from a chair, getting up from the bed, the breath gets held automatically. The breath gets held automatically. And the other thing is, there's a count till which you have to inhale, there's a count till which you have to hold. So you, if you are told to hold for a count of 5 and you are able to hold for a count of 1 only, it's okay. Because most of the people will not be able to do as per the count initially. But as you keep on practicing, the goal is to reach that count only. But your mentors will guide you. They'll time and again tell you, do as per your capacity, as per your comfort level. Nothing has to be forced on the body. But the goal is to reach that count only. So as per your capacity, as per your comfort level. So he'll be able to do, because a lot of times we get such people who think they can't, but when they do it consciously, they can. Mm, Digesh P. How will it prevent increase of level of Parkinson? If it can reverse, it can prevent also. If this can reverse, it can prevent also. So then when we take allopathy also, Shivaramji is asking. Yes, you are not advised to leave any medicine when you're starting this therapy. As you keep on practicing, after a time, you'll feel that, okay, there's some improvement. So now your doctors only, they'll reduce your medicine because they're the ones who started your medicine. So they'll be the one, they're the one who will be reducing. But initially, whatever medicine you are taking, please continue with that. Vimal Arora ji is asking, my husband is Parkinson's patient. I want to ask for him. Please ask. Uh, that's what this chat is about. सुमन बंसल, क्या रिकवरी 100% हो जाती है? 100% कुछ भी नहीं होता है सुमन। जैसा मैंने पहले बताया, अगर किसी का 20% भी होता है, 30%, 40, 50, 60% भी होता है, तो भी बहुत बड़ी बात है ना। वो भी दवाई के इस्तेमाल किए बगैर। 100% तो कुछ नहीं होता है, बिकॉज जैसा पहला शरीर था वैसा वापस नहीं होगा। बट यस, यूल हैव अ लाइफ टाइम विच यूल बी एबल टू, यूल बी इंडिपेंडेंट। पार्किंसन में या क्रॉनिक एलिमेंट्स में डिपेंडेंसी जो हो जाती है फैमिली मेंबर्स के ऊपर, वो आप इंडिपेंडेंट हो पाए। Vanishri Vallagan. My mother has been taking Parkinson treatment. She is bedridden patient who is 80 years old.
How does Kumbhak therapy help her? No tremors, but not able to speak, except few replies, rarely one or two sentences, but excellent memory, having nervous weakness. We need more details, Vanishji, so that we can understand whether she actually has Parkinson's or not. Chandrasekhar Bapat. I'm suffering from freezing shoulder disorder for almost 5 years. Will it be helpful to treat this disorder? We need more information on this. Chandrasekhar Bapat sir. Sarika ji, would it be possible to speak to your treated patients from previous batches to know how many have seen benefit before registering for this program? No, that's not a possibility at all. No therapist will allow their patient to talk to others. It's a infringement on their privacy. Kumbhak, will it be beneficial or fully cure dementia? We're not talking about fully. We're talking about improvement. We're talking about getting independent. For dementia, we may have to we may need some more details so that we can suggest the correct program, because like I said, there's another program by the name of Ashtang Chikitsa. So based on the details that you give, we'll be able to guide you properly. Ammu Kunenji. Okay. Can we change the batch? It's allowed to change the batch once, but it doesn't, it's not practically useful, because one batch is starting, the second batch is starting after 14 days. So on any given day, the topics covered in each class will be different. The topic covered in each class will be different. So it's not practically possible. It won't be useful at all. But if there's a genuine reason, you can definitely. Uh, Abhishekha Bapatji, what additional information you need from me? I'll just put my WhatsApp number and you can share the details there. Just share my WhatsApp number, and what details are required is age, weight, height, and second is all the health issues and in the order that they occurred. That first this issue happened, then this, then this. In this way, Chandrasekhar sir, you have to send. And if possible, a selfie photograph also without specs. So we'll then forward it to Swamiji and get guidance from him. Okay. Its smell loss has been there. Can this be improved? Yes. Some of our previous participants, they've reported this. It can be improved. VK. So Swamiji cannot be contacted directly. You can, I shared my number, and whatever message you have, you can send on my number, then we'll pass it on to Swami. Swaran Jain, how many cases in a week? Sorry, I didn't get you.
How many cases in a week means? Pragya ji, please send. I've just shared my number, WhatsApp number. Please get in touch with that so that we can get individualized answer and a detailed one. Classes in a week, 2 classes in a week for 10 weeks, which means 20 classes, live classes overall, total. Which number? I just shared, I'll share again. Yes, you can talk to me tomorrow after 10 a.m. Any offline classes? No, sir, no offline classes. We conduct all our programs online only, which you can join from anywhere. C and Parkinson's be treated together. Yes, they can. Like I told you that in the branch of diagnosis, based on the diagnosis, Swamiji will give personalized Kumbhak practice. Rajiv in other scheduled one. For example, I may have to miss the classes on January 21. What option do I have? So Rajiv ji, you'll have recordings of all the classes. So you'll be able to cover the missed parts from the recordings. And if still there's uh, any doubt, any question, you'll be able to ask directly from your mentors in the class WhatsApp. Yes, Davinji, I am unmuting you. You can ask, you raised your hand. Sir, can you hear me? Yes, yes. Sir, I have been having epilepsy for last 20 years. And around 1 year back, I've been detected with Parkinson, and left side of the body is not, and balance is not working properly. And even the balancing is not there. So can this, along with allopathic medicines, can this be treated with Kumbhak? Sir, can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Can you hear me now? Sir, just Yes, yes, Davinji, I've been hearing you. Yes, these both can be treated. I've shared my number. You just send the okay. details on the WhatsApp, and Okay. I'll still confirm from Swamiji, and then I'll let. Okay. I'm sharing again. This is for everyone who's still here. If they want to get confirmations for the specific condition, you can send me a WhatsApp number. And tomorrow you can talk also after 10 a.m. Day fixed for classes. Yes, days are fixed for the classes.
Vanishi ji is asking, my mother is not able to sit for a long time. Does it help us? Yes, she doesn't have to sit for long. Uh, that she, if she can sit for 15-20 minutes, then she can, get up and then again sit. And it's not compulsory to sit on the floor. Wherever you feel comfortable, you can sit there, either on the floor, chair, or even on a bed also. Multiple sclerosis. Yes, Sangeeta ji, we have a program called Ashtanga Chikitsa. If you post the same query in WhatsApp group, Neha from our team, she will share the details of that. Which days in a week? We've shared all the class dates in the WhatsApp group because there are 2 batches starting. One is on 13th Jan, 7 p.m. and one is on 27th January, 7 a.m. We've shared all the dates of each batch in the WhatsApp. Okay, she is bedridden, not able to sit in bed on her own. Vanishi ma'am, you please talk to me tomorrow. Please talk to me tomorrow on the phone. I'll suggest some alternatives. Is this Kumbhak different from pranam? Yes, yes. The Kumbhak that is used in this program is a part of Ayurveda, not pranayam or yoga. That's what we discussed. Minal Dashu. Uttara. Can we stop allopathy medicines? Not when you are starting the program. Please continue with your medicine, whichever medicine, be it any medicine, allopathic or any medicine. But yes, ultimately the goal is to leave medicines, but not immediately. No, no, this is not meditation at all. This is therapeutic, pure. Alpna ma'am, you'll have to send a message to me first, whatever message you have for Swamiji. I'll just share my number. So directly, Swamiji's number is not given. If I join group class, will it get personal attention? Absolutely. Absolutely. Individual attention is given it. And after the class, if you have any doubt, after the class only, in the live Zoom class only, you will be able to ask also. But a lot of times the questions come when the class is over. So that time you will be able to ask in the class WhatsApp group on a daily basis. Yeah. In the Zoom classes or in the online classes, we say that every seat is a front seat. What it means is our backend team, they'll be apart from the mentor, we have support staff who Zoom each and every participant. We can Zoom every participant and we can see how we are doing the Kumbhak practice, Kumbhak Kriyas. So that way we keep a watch on everything.
Rachna ji, are you there? Yes. Is Swamiji joining or? No, he's No. not taking the call. Okay. So I think Swamiji is stuck somewhere. I need to say something. Please say. Samsung SM. What is the guarantee for the treatment if it is not curable? See, there are no guarantees in life. There are no guarantees in life. Even our life is not guaranteed. But what we can guarantee is that you will be taught in the most suitable environment. And based on our previous results that we got on our participants, so that's the biggest guarantee for you. And the other thing is, and this is for all who are still here, as much as is our responsibility, no classes will be missed, no classes will be cancelled. In the last 4 years, we just cancelled 2 classes, just 2 classes in the last 4 years. And the mentors, the classes start on time. The other part of the equation is you. How regular are you? How regularly are you practicing? If you're able to ask any query or any doubt or not, it's two-sided. If you can guarantee your regularity, if you can guarantee that you'll be following as we'll be teaching you, then there's nothing stopping you. And this question, we don't take it very lightly, that guarantees, we don't want to dismiss this question, but it's both ways. We'll teach you what we've taught 10,000 participants and who got great results with this, and you can listen to them. YouTube channel, we have more than 500 testimonials there. And I share my details to your personal WhatsApp. Absolutely. Is this a breathing exercise? See, when we say breathing exercise, different things come to mind. Something is pranayam, something is anulom vilom. But these practices are designed, I'll tell the science behind this. And when you inhale with a count, when you hold till a count, when you exhale with a count, an epigenetic trigger goes to the stem cells of the internal organ. And if you know, the stem cells are the ones which help regenerate the organ. The stem cells help regenerate organs. And when the epigenetic trigger happens, the trigger is given, and then the stem cells, they start the regeneration process, because ultimately it's organ weakness. So if we are able to strengthen the organs by regenerating, because the regeneration factor has gone down, so increase the regeneration factor only can be a permanent or a long-term solution. So that's the science behind this. It's not a normal breathing exercise. You'll be learning different Kumbhak formulas. By formula we mean there'll be a count. The count will differ to impact different organs differently. So it's not a breathing exercise as such. But yes, this is a breathing exercise also. But there's a count, there's a formula. All right, so we've taken up all the questions, and I think Swamiji is stuck somewhere. Okay, I'll share again. I'll share my WhatsApp number again. Swamiji was not able to join, so extremely sorry for that. Maybe he's got stuck somewhere, either in traffic or in some other meeting. But we were able to take up all the questions. If your question is still not answered, or if you come up with a question later on, please post the question in the WhatsApp group, and we'll answer every question there. And with this, we come to the end of this session.
Thank you for attending it till the end. And we hope that you got some insights into how you can get out of Parkinson and how you can get a more hold over your body, over your disease, and lead a medicine-free life. Thank you, everyone, and a good night to all. Namaskar.